No, sir. All right. The equation of adiabatic process is given by PV to the power gamma is equal to constant. Okay. Derivation is not in our course. So P, where P is the pressure, absolute pressure, V is the volume, and gamma is adiabatic index, which is the ratio of Cp and Cv, which will also be constant, in fact. Graph is similar to the isothermal expansion, but slope is more. Isothermal expansion will be like this, and this will be like this. Right? So it is more slopey, more slope, and PV diagram. Okay. So this is the equation. There are some numerical asked or asked from this equation. So we can do one of the numericals based on this equation. Okay, other one is, first we'll do the other equation, other numerical. This one we'll do, NCERT book numerical. This is based on adiabatic expansion, adiabatic process, as well as first law of thermodynamics. Let's see what is this question. Number 5, in changing the state of gas adiabatically from equilibrium state A to B, A to the another equilibrium state B, an amount of work equal to this much is done on the system है ना, adiabatically. तो अभी हमने देखा था equation, work done is equal to change of internal energy है ना, in the adiabatic process, this one, because heat transfer is 0. So we get this relation, work done and change of internal energy के बीच में, we can use this. So work is done on the system, how much? On the system means minus है ना, 22.3 joules is equal to minus delta U. So change of internal energy we are getting 22.3 joules. ठीक है, इतनी internal energy उसकी change हुई. Now, if gas is taken from A to B via the process in which heat absorbed by the system is 9.35, दूसरा system से A to B, A to B when we go, heat absorbed is 9.35 calorie. So delta Q is given 9.35 calorie multiplied by 4.2, which will be 39.2 joules. Okay. How much is the net work done by the system in the later case? So first law of thermodynamics we use, heat supplied is equal to work done plus change of internal energy. Heat supplied is 39.2. Work done we have to find out. Change of internal energy is independent of process. First process से जितना रहेगा A and B के बीच में change of internal energy same will be through the second process. How much was the 22.3? So work done will be difference of both. It will be coming 16.9 joules. Got it? This is very important question for competitive examination also. Through adiabatic process, we got the internal energy. To any other process, change of internal energy for same change of state A to B is going to remain same. Heat is given using the first law of thermodynamics, putting the value. This equation you know from FLT, first law of thermodynamics. So solving it, we get work done will be 16.9. The rest of the energy will increase the internal energy. Clear to everyone? Yes, sir. One more question based on adiabatic process. Let's see what is that.
ये देखिए, ideal gas at pressure 8 atmosphere undergoes adiabatic expansion such that its volume becomes 16 times. Find final pressure if gamma is equal to 1.5. How to do this question? कौन सा formula? P1 V1 to the power gamma is equal to, that is what is the adiabatic process represented by this equation. PV is equal to constant can be written P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V to the power gamma. Putting the values now. Initial pressure is 8. Volume is 16 times of the initial value. This will be 16 times of V1 to the power gamma. Gamma की वैल्यू भी दी हुई है. गामा कितना है? 1.5. 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं. यस. Yes, sir. तो 3/2 P2 निकालना है. And this is V1 to the power 3/2. ठीक है. तो 8 into 16 to the power 3/2 V1 to the power 3/2 P2 V1 to the power 3/2. ये तो कैंसिल हो गया. How much will be the 16 to the power 3/2? क्यू रूट ले लो पहले. नहीं, V2 in fact we are just done mistake here. V2 is 16 times. So V1 is 3/2 and V2 is 16 times. P2 calculate करना है and V2 16 times of V1. ठीक है. 8 into V1 to the power 3/2 P2 16 to the power 3/2 and V1 to the power 3/2. ये cancel हो गया. 8 is equal to P2. 16 to the power 3/2 means 16 का क्यूब. पहले रूट ले लो. रूट लेंगे 16 का तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा. 4 का क्यूब कर दो. 4 का क्यूब हो जाएगा 64. So this will be 64. Is it okay? Or Yes, something is गड़बड़? 16 times. तो क्यूब अंडर रूट लिया तो 4, क्यूब किया तो 64 है ना. All right. P2 will be 1/8 atmosphere. Pressure drops, and because expansion is taking place, therefore pressure will decrease. All right. No problem. No, sir. Like these questions are generally asked, so you should be able to do it. Moving further, let's see what is next one. Other relation can also be written for adiabatic process. First one, this is the main one. PV to the power gamma is equal to constant. This is the main relation. Now we can change it to the other form also using the ideal gas equation. So ideal gas equation is PV is equal to nRT. So finding the value of P will be nRT by V. और ये P की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम. तो what is this nRT by V? यहाँ पर आ गया. V to the power gamma as it is equal to constant. तो इसमें constant क्या है? nR. So this will come this side. तो और V will go here. Gamma -1 हो जाएगा. It will be T V to the power gamma -1 is equal to constant. For numericals, we have to use it like this.
एक मिनट थोड़ा सा मैं let me make this page first. Yeah, can you see it? Yes, sir. So there's a question number 2. There's a question number 2. From numerical point of view, we can write like this: T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 V to the power gamma minus 1. Like this we can write. Okay? Now we can also place the value of P. V key value. We can also replace V using the ideal gas equation. PV is equal to nRT. V will be nRT by P. This V की value यहाँ put कर देंगे, है ना? तो this comes here, P as it is, nRT to the power nRT upon PV to the power gamma, nRT upon P to the power gamma. ये तो constant है. They will go, this side will become another constant, and यहाँ पे P to the power gamma नीचे ऊपर आके 1 minus gamma हो जाएगा और T to the power gamma as it is. So this is the third equation. The first one is this, second one is this, third one. So particularly competitive examination, there are questions are being asked from this equation also, or this equation also. तो जैसा अभी हमने इस equation से किया वैसा इससे भी कर सकते हैं. So these are the 3 equations for adiabatic process. All right. So you have to remember them. Or you should be able to convert them using the ideal gas equation. एक बार हमने P को replace किया और एक बार V को replace किया. Constants will go this side. Variables will be on left hand side. ठीक है? So what we have done today, we have seen the equation of adiabatic equation, main equation PV is equal to PV to the power gamma is equal to constant, and उसका graph ऐसा आता है ना. Similar to the isothermal. Isothermal का भी ऐसा ही graph है, and but this will be more steep, more slope will be there for this. Isothermal का ऊपर रहेगा ऐसा, and adiabatic का ये रहेगा. ठीक है? So this we have seen, and इसको ideal gas equation को use करके हमने other 2 form also we have written. These 3 equations will represent the adiabatic process. Okay. Yes, sir. Now we can see the what is called work done in adiabatic process. Here also pressure is variable, so we have to take the help of the integration. जैसा isothermal का किया था कल, work done. Similarly here also we have to do using the integration. Let n be the number of moles, P1 V1 be the initial pressure and volume, and P2 V2 be the final one. T1 and T2 will be the initial and final temperature. ठीक है? So we know the equation PV to the power gamma is equal to constant. उसको K ले लेंगे, constant को थोड़ी देर के लिए K assume कर लेते हैं. In fact, K will be nothing but अगर हम if we write mute it whose mic is down, just mute it. यहाँ पे देखो, this equation can also be written like this: P1 V1 to the power gamma. What is this? Manushri, mute your mic. Are you there? Manushri. Yes, sir. आपका mic on है. Yes. Okay. तो देखो, this equation can also be written P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V to the power gamma is equal to K. ठीक है? तो or we can simply in terms of these will be the initial and final pressure volume. Intermediate pressure क्या होगा? यहाँ से देखो, इसको solve करेंगे, इस term को इधर भेज दो, so it will become V to the power minus gamma. So we got the pressure K V to the power gamma minus gamma.
तो दिस वी कैन यूज द प्रेशर और के वी टू द पावर माइनस गामा, ठीक है। तो वी नो वर्क डन इज पी डी वी लिमिट v1 टू v2। पी की वैल्यू ये वाली हमने पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, लिमिट लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक v1 टू v2। के को बाहर निकाल लीजिए, के इज द कांस्टेंट, v टू द पावर माइनस गामा dv v1 टू द v2 क्या आएगा बोलिए, के तो बाहर है, v टू द पावर माइनस गामा का क्या होगा इंटीग्रेशन, गामा इज कांस्टेंट तो प्लस हो जाता है, पावर प्लस हो जाती कि नहीं होती, प्लस वन हो जाएगा। सिंस वी नो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यहाँ पर n की जगह क्या है माइनस गामा है, उसमें प्लस वन हो गया और नीचे भी वही आ जाता है। इसके बाद क्या करना पड़ता है, लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू के, इसको हम वन माइनस गामा लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए पहले, बाद में फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट आ जाएगा v2 की जगह, v की जगह, तो v टू द पावर गामा माइनस वन प्लस वन और माइनस लोअर लिमिट लिखते समय, अभी ये v1 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह माइनस के बाद v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन, ठीक है। तो ये आ गया। अभी k की वैल्यू क्या है, k को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी k v टू द पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस k v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन, ठीक है। अभी k की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू दोनों वैल्यू है k की, टू वाला टर्म्स भी है वन वाला, तो टू वाले टर्म्स टू के साथ देखेंगे, यहाँ पे v2 है तो ये टर्म्स यहाँ पे k की जगह आएंगे, क्या आ जाएंगे, वन माइनस गामा नीचे रहेगा एज इट इज, k की सेकेंड वैल्यू पुट कर दी टू वाली, दैट इज p टू द पावर गामा, और v2 ऑलरेडी है यहाँ पर, कितना है v2 माइनस गामा प्लस वन, और यहाँ पर वन वाला k की वैल्यू वन के टर्म्स में p1 v1 टू द पावर गामा और v1 माइनस गामा प्लस वन। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो वन माइनस गामा, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे v टू द पावर माइनस गामा और ये v टू द पावर प्लस गामा ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस वन, ओनली v2 बचेगा यहाँ पर, इट विल बी p2 v2 माइनस p1 v1, ये बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट इज दिस, ये आ जाएगा नीचे, कैन यू सी, ये आ जाएगा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, क्या चेंज करेंगे, पीवी आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ पर टू वाले टर्म्स है तो T2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर एनआर कॉमन ले लिया, T1 बचेगा, है ना। कैसे चेंज किया हमने, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो T2 क्या है बोलिए यहाँ पर, दिस इज जनरली यूज, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, वन वाली इनिशियल वैल्यूज है, टू वाली फाइनल वैल्यूज है, सिंपल, नथिंग टू राइट अगेन एंड अगेन, ऊपर हमने लिखा हुआ है, गॉट इट। दिस डेरिवेशन इज यूजफुल, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यहाँ तक तो सिमिलर है जैसे कल किया था, उसमें वन बाई वी था तो लॉग वी हो गया था, यहाँ पर वी टू द पावर माइनस गामा है तो ये एच टू द पावर एन वाला फार्मूला लगा, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, लिमिट लगाते हैं v2, v की जगह v2 वाला टर्म आ जाएगा, पावर एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे लोअर, ये तो बाहर आ गया, लोअर लिमिट में v1, फिर से v को v1 से रिप्लेस करेंगे, पावर एज इट इज रहेगी,
के को अंदर मल्टीप्लाई किया, के की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, एक यहाँ है क्या, तो यहाँ पे वी टू द पावर गामा और ये वी टू द पावर माइनस गामा, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस वन भी है तो वी टू बचेगा, यहाँ पे वी वन बचेगा। तो ये डेरिवेशन यू कैन जस्ट लीव इट हियर और यू कैन ब्रिंग इट हियर बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम दिस। तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआर कॉमन लिया, T2 बचा अंदर, T2 माइनस T1 बचा। So this is the derivation given in our textbook. You are supposed to practice this. Without seeing, you should be able to derive it. ठीक है? Anything you missed the point, you can ask again. Variable pressure में we do the different integration यहाँ से. P pressure variable है तो integration से. First two process में we are not done integration because pressure was constant in second process. First में तो work done 0 था. Okay. Yes, sir. तो इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, देखो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। हियर इज द क्वेश्चन, देखो what is given, 16 gram of oxygen having gamma is equal to 7/5 undergoes adiabatic expansion. Find the final temperature if initial temperature is T, if work done by the gas is R joules. R क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, आई मीन गैस कांस्टेंट होगा, इधर भी R है, कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, n बीइंग द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास, n कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन, नहीं, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास, मास ऑफ द गैस इज 16 एंड ऑक्सीजन इज डायटोमिक, तो इसका मोलर मास 32 होगा, तो 1/2 नंबर ऑफ मोल्स जो है 1/2 है। T1 इज गिवन T, T2 निकालना है, ठीक है, एंड W इज गिवन R एंड गामा इज आल्सो गिवन, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, R जूल्स, N is 1/2, R as it is, T1 is T, T2 कैलकुलेट करना है, गामा माइनस, अच्छा यहाँ पर मैंने फार्मूला चेंज कर दिया था, T2 माइनस T1 है ना, नीचे 1 माइनस गामा है, तो T2 माइनस T1 1 माइनस गामा, इसको हम साइड चेंज कर सकते हैं, गामा को पहले लिख सकते हैं तो T1 पहले आ जाएगा, तो बुक्स में दे राइट T1 माइनस T2, बट वी आर जस्ट नॉट चेंजिंग द साइड, दैट इट वी लाइक दैट, जो हमने डिराइव किया वही लिखते हैं, ठीक है। तो T2 कैलकुलेट करना है, T1 इज T, नीचे 1 माइनस गामा, गामा इज गिवन 7/5, ऑक्सीजन का 7/5 होता है, ये आपको दिया भी रहेगा। तो R तो हो गया कैंसिल, लेफ्ट साइड में क्या बचा 1, और इधर क्या होगा T2 माइनस T1, नीचे 2 है, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा देखो 5 माइनस 7 और ऊपर 5 आ जाएगा ना, तो ये कितना आ रहा है आपका इधर, इसको इधर ले आओ, -4/5 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T1 इज T, इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन T, तो ये T2 आपका कितना आ रहा है, T2 इज T minus 4/5, and something has gone wrong or it is okay, कैलकुलेशन एक बार देख सकते हैं, do I have the answer, हाँ 4/5 सही है, it's okay, ठीक है।
तो T2 is equal to T minus 0.8. It is dropping. Temperature is dropping. Why it is dropping? Because work is done at the cost of internal energy. Internal energy will decrease. So temperature decreases because work is done by the gas at the cost of internal energy. Are you there? Yes, sir. इसको मैं नीचे फिर से लिख रहा हूँ. Just let me hold it horizontally and right. So temperature decreases, temperature drops since work is done at the cost of internal energy. Cost of internal energy. ठीक है? Internal energy will decrease. Therefore, temperature will drop. Clear to everyone? This can be important question. Noted. Okay. Now, suppose if I ask similar to that question which we did in the isothermal process, what is the molar specific heat? What is the molar specific heat in adiabatic process? तो molar specific heat का symbol C देते हैं, which is energy per unit mole per unit change of temperature. But heat transfer is zero in the adiabatic process. Delta Q is zero, so C is zero. So molar specific heat is zero because no heat is supplied in the system. Therefore, specific heat, molar specific heat is zero. So we can see the specific heat, molar specific heat in the gases depends upon the type of the process. Or if I ask you what is the slope in adiabatic process, तो इसको differentiate करके dp by dv निकालना है, तो we are not doing it. ये गामा आ जाता है, माइनस गामा pd. आइसोथर्मल में क्या आया था? माइनस था और p था और v था, और गामा नहीं था. यहाँ पे गामा भी है because we have the power here gamma. तो gamma times of p by v minus. So this is useful for JEE and NEET. Okay. Because differentiation is involved. We are not doing the differentiation, just directly writing. You have to just remember. So gamma times more, and gamma is always greater than 1 because gamma is Cp by Cv. So Cp is greater, so it will be greater than 1. So here slope is more. Negative slope to hai, but more slope. Bulk modulus also, bulk modulus you can just find out. Bulk modulus कितना आएगा? This is again JEE question and NEET question. Bulk modulus का अगर आपको फार्मूला याद है, which is minus dp upon dv into v. यहाँ पे minus dp by dv की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी हमने ये.
तो माइनस माइनस गेटिंग कैंसल, वी गेटिंग कैंसल, तो बल्क मॉडुलस इज गामा टाइम्स ऑफ पी इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस वाज इक्वल टू पी, हमने डायरेक्ट लिखा था वहां पर। तो दीज आर द एडिशनल क्वेश्चन which can be useful for your competitive examination. So, Yeah. so can you show that slope? Yes, sir. Hmm. Now, if we find the ratio of both the slopes, isothermal का और adiabatic slope का ratio निकालें, divide कर देंगे, minus p by v will get cancelled. तो देखो done. Okay. अगर हम रेशियो निकालें, अलियर हमने आइसोथर्मल का निकाला था प्रीवियस क्लास में, माइनस पी बाई वी था। एडियाबेटिक का अभी हमने लिखा माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी, इट इज कमिंग गामा टाइम्स, है ना। तो आइसोथर्मल, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, गामा इज मोर देन 1। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है इट इज मोर, एज आई टोल्ड यू। देखो यहाँ पे कैन यू सी आइसोथर्मल का लेस स्लोप, है ना। ऐसे आप समझो ये, दिस इज द जस्ट inclined plane and this is another inclined plane, this is having more slope. If you sit down here and slide down, so which slope you will feel more? This one, this is almost high slope, this is low slope, है ना। ऐसा कुछ होगा तो zero slope बोलेंगे इसको, है ना। This is called zero slope, vertical line is infinite slope, है ना। तो adiabatic will have more slope, got it, as compared to, I am talking about expansion. Compression may be, if it is gases are being compressed, then also adiabatic will have more slope. Compress करेंगे तभी भी. This is again useful for competitive examination. Slope of adiabatic is greater than slope of isothermal, either compression or expansion. P will be here, यहाँ पर P रहेगा. एक पॉइंट और अगर आपको याद होगा कि एरिया अंडर द पीवी ग्राफ गिव्स द वर्क डन, तो इसका देखो आइसोथर्मल का एरिया मोर आएगा, एडियाबेटिक का एरिया कम होगा, तो वर्क डन विल बी लेस इन एडियाबेटिक प्रोसेस as compared to isothermal process, और same change of volume, यहाँ पर V1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे V2, तो area gives the work done. Let's see question based on that, which process will have maximum work done, either isobaric or isothermal or adiabatic, तीनों में से सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? तो by seeing the area we can write. So let's see that question. यहाँ तक okay, no problem. Are you there? No response coming. कोई डाउट है इसमें? Again, no response. Am I audible? Yes, sir. Okay.
अच्छा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप घर में. now itself you can check it. देखो, if you blow out the air, देखो यहाँ पे first diagram, if you see, put your hand a few centimeter in front of your mouth, open your mouth wide and exhale करिए. your breath will feel warm on your hand. इस कंडीशन में अगर आप exhale करेंगे तो you will feel the hot air, whereas now you just close your lips and blow the whistle or blow the air out. Now क्या होगा इस कंडीशन में? it will be just very fast, it will be coming out. It is equivalent to the adiabatic expansion. Exhaled gas will feel much cooler. You can do the experiment and check it whether it is correctly written. In this case, the gas undergoes rapid essentially adiabatic expansion as they emerge from your lips, so that temperature of exhaled gas will decrease. It is sudden expansion. Yesterday we have seen that experiments and all, sudden expansion was producing the cooling process. Here also you can feel the cooled air coming out in this case because it is a rapid expansion. Got it? Experiment कर सकते हैं अभी क्लास के बाद. Now all these processes which we have seen, isothermal में क्या था? Temperature constant था. Isobaric, it was pressure constant. Isochoric, volume constant. And adiabatic, no heat flow between the system and the surrounding, delta Q is 0. All the four processes summed up here. You can just recall them easily. ठीक है? Now, yeah, done. जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है, starting from the same initial condition, and ideal gas expands from volume V1 to V2 in three different ways. The work done by the gas is W1 if the process is isothermal, W2 if it is isobaric, W3 if it is adiabatic. So which of the option is correct? Area under the PV diagram. तो सभी तीनों प्रोसेस ड्रा कर लेंगे ना. तो देखिए यहाँ पर if you draw the, okay, you can see the whole question together with the answer. Can you see it? The isobaric process, pressure constant will be, graph will be like this. This will be isothermal and this will be adiabatic. तो सबसे ज्यादा किसमें? isobaric process में, for same change of volume. This much area is covered. So isobaric was which one? W2. W2 is maximum. इसमें और इसमें से एक आंसर होगा. Second one is one, that isothermal का एरिया इतना आ रहा है. तो one, second number पे one. So this is the option. Third will be adiabatic. Adiabatic is third. So A is the right answer. ठीक है? So this is again important question, particularly for competitive examination. Isochoric का ग्राफ कैसा आएगा? Isochoric will be like this, vertical line. Volume doesn't change. तो उसमें तो no volume, no area covered. इसमें volume 0 हो जाएगा. Isochoric they have not given.
Isochloric means constant volume process. No work is done in that case. ठीक है? Change of volume should be equal. Otherwise, we cannot say anything. V1 to V2 change of volume are given equal. Number of moles doesn't matter then. Okay. Of course, graph. एक minute. Just let me see. Graph of the एक minute. It is for same gas. In fact, okay. It is for same gas. You take same gas and it then expand it isobarically, then expand it adiabatically and isothermally in that case, and for same change of volume V1 to V2. अगर ग्राफ दिए होंगे, अगर ग्राफ अगर दिए हैं, then we can say number of mole doesn't matter. ग्राफ से हम आइडिया लगा सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने ideal gas means same ideal gas is heated differently or expanded differently. V1 and V2 are given same change of volume, same initial and final volume. ठीक है? Any doubt here? बोलिए, any doubt here? No response coming again. Anything you want to clarify here? What is the other name of PV diagram? Also called indicator diagram. Are you there or not? I am not getting your response. Yes, sir. Okay. Any doubt? No, sir. Okay. Suppose if this it is given, देखो यहाँ पर देखो. The figure here shows 5 paths traversed by the gas on the PV diagram. Rank the paths according to the change of internal energy of the gas greatest first. One path is like this, second is this, third is like this, fourth is like this, fifth is like this. Suppose fifth is not given, चलो fifth को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा easy कर देता हूँ आपके लिए. Fifth is not given. What will be the answer now? Change of internal energy किस पे depend करती है? Depends on change of temperature. तो सभी में टेम्परेचर सेम चेंज हो रहा है. देखो ये T1 से T2 जा रही है, ये भी T1 से T2, ये भी T1 से T2, ये भी T1 से T2. तो सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल 1 2 3 4 टाई हो गया. बिकॉज चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम है, पाथ पे डिपेंड करता नहीं है ना. किसी भी प्रोसेस से T1 से T2 जा रहे हैं आप, तो चेंज ऑफ एनर्जी only depending upon change of temperature, that's all. Doesn't matter which path you follow. वाला मैक्सिमम होता है. फिफ्थ में क्या रहता है? टेम्परेचर चेंज इज लार्ज, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, T3 माइनस T1 है. तो फिफ्थ वाला मैक्सिमम था, बट रिमेनिंग आर इक्वल. Fifth is the greatest change in T. 5 is the greatest when change in T. Then tie of 1 2 3 4. Shall I bring back the original question? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे fifth is the greatest
fifth is maximum, and same for all remaining. Fifth में maximum क्यों है? Because change of temperature is more. यहाँ पे कौन सा maximum temperature होगा? T3 will be maximum than T2, T1. अंदर वाला जो ग्राफ है सबसे कम टेम्परेचर का होता है. These are called isotherms. कल हमने लिखे थे. Outer graph will have more temperature. So this can also be useful for your competitive examination because question seems to be tough, but it is easy, है ना? Change of temperature देख रहे हैं ये भी 1 to temperature T1 to T2 going. It is also T1 to T2. This is also T1 to T2. This is also T1 to T2. 1, 2, 3, 4 all are having same change of internal energy. And T5, I mean fifth process, gas is going from 1 to third temperature, T1 to T3 temperature. So maximum temperature. Okay. Like these questions are there for testing you. अगर वर्क डन पूछेंगे तो हीट सप्लाइड पूछेंगे तो वर्क डन में एरिया निकालना पड़ता है और हीट सप्लाइड में दोनों. इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं ना, हीट सप्लाइड वर्क डन निकालो, वर्क डन में एरिया देखना पड़ता है. टोटल हीट सप्लाइड पूछेंगे तो वर्क डन प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी करना पड़ता है. तो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वर्क डन, है ना, तो फिर टोटल हीट भी निकाल सकते हैं. उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा लाइक दिस. इसमें सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? फोर्थ वाले में होगा, एरिया सबसे ज्यादा है उसका. हीट सप्लाइड भी फोर्थ होगा. सेकंड नेक्स्ट नंबर पे थर्ड का वर्क डन होगा. चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी सेम बिकॉज ऑल आर कमिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट सेम प्लेस, है ना. चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी तो सेम रहेगा. फर्स्ट पार्ट वर्क डन फोर्थ में ज्यादा रहेगा, फिर थर्ड में, फिर टू में, फिर वन. हीट सप्लाइड फोर्थ में सबसे ज्यादा रहेगी. ठीक है. कैन यू सी change of internal energy is same for all? Are you getting? These are very easy questions if you pick up the main actual point. अभी हमने देखो इंटरनल एनर्जी की बात की तो सभी में सेम है बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर T1 ले लो और ये T2 ले लो, है ना. तो all are passing through the same temperature coming starting from T1 to T2. तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पूछा फर्स्ट. इंटरनल एनर्जी का सिंबल इन्होंने E लिखा है बट हम लोग U लिखते हैं ना, डेल्टा U कर देते हैं उसको. ठीक है. वर्क डन भी अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था एरिया, तो एरिया सबसे ज्यादा फोर्थ का है, 4, 3, 2, 1. और हीट सप्लाइड पूछा है, हीट सप्लाइड इज सम ऑफ बोथ द थिंग्स. इंटरनल एनर्जी तो सेम है बट वर्क डन जिसमें सबसे ज्यादा है उसमें हीट सप्लाइड विल बी मोर. फोर्थ में सबसे ज्यादा है, देन थर्ड, फिर टू. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी इजी आल्सो. particularly it can be asked in both examination. आपके एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो. वर्क डन का हमने क्या देखना है? एरिया अंडर द पीवी ग्राम, है ना. एरिया वर्क डन में किसमें क्या देखना है? चेंज ऑफ टेम्परेचर देखना है. क्लियर सो फार? Manushree, it is okay? Manushree, are you there? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Verify. वर्क डन के लिए क्या करना पड़ता है? एरिया देखना पड़ता है ना. एनर्जी के लिए क्या देखना पड़ता है? चेंज ऑफ टेम्परेचर. हीट सप्लाइड इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.
change of energy plus work done. So this is all your different questions. Now I think time is over. Tomorrow we can see the second law of thermodynamics and reversible and irreversible process. These 2 points are remaining. Then we can see some demo and then we can start the last chapter. Heat engines and refrigerators are not there. They are deleted in our revised course. That we can see it later on while revision. First we'll finish the course topics according to the current course, current syllabus. That's all from my side.